Yeah, I mean, I just applied for that test. Best thing was that there is no, like, you don't have to pay anything for the test. You can give the Yes. test as many number of times. And you won't believe, like, I prepared just one day before for it. Like, I mean, कि हाँ कैसा टेस्ट है, बहुत टफ है, बहुत डिफरेंट है. me who's not having any tech background, no PM experience. Yeah, If yeah, I yeah. can crack it, then I think anybody can crack it definitely. Overload कर लिया था coffee पी के. That whatever maximum CTC was mentioned on the product management test on the Relevel platform, like you have all these maximum 25 LPA for, like, it was for product management, maximum 40 for Android or backend. So I've got more than that maximum also. So हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी ए प्रोग्रामर में. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक इतने तगड़े बंदे से मिलवाने वाले हैं. हिज नेम इज राहुल एंड उन्होंने एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट का टेस्ट क्लियर किया है. एंड पहली चीज़ तो दैट इज हाईएस्ट स्कोरर वो रह चुके हैं जनवरी में, मतलब एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट के टेस्ट में, और 337% का हाइक मिल चुका है उनको. तो एक एक एक्सपीरियंस वो शेयर करने वाले हैं. तो मेरे को नहीं, उनको थैंक यू कह दो, बिकॉज एक पूरा दिन, मतलब पूरा दिन काम करने के बाद वो हम लोगों ने 8 बजे वो वीडियो शूट की हुई है. तो प्लीज़ रात में 8 बजे, तो प्लीज़ यार इस बात के लिए, इस एफर्ट्स के लिए उनको थैंक यू जरूर कहना, ठीक है. तो यही सारी चीज़ें, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सारा एक्सपीरियंस, एक एक चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाली है. क्रिस्प वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो, एक एक चीज़ें, एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक लेवल्स के बारे में. तो प्लीज़ यार नीचे लाइक करें, कॉमेंट जरूर करना. स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलो देखो. सो हाय, हेलो एवरीवन, टुडे वी आर विद राहुल. और सबसे पहली चीज़, स्टार्ट करने से वीडियो को पहले एक चीज़, मैं एक डिस्क्लेमर आपको देता हूँ. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच राहुल, बिकॉज ही हैज जस्ट ज्वाइन इन सच अ शॉर्ट नोटिस. अभी जस्ट वो ऑफिस से आ रहे हैं और हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं. 8 बज रहा है, अभी रात के 8 बज रहे हैं, जस्ट अभी ऑफिस से आए हुए हैं. तो पहले तो राहुल को हम कहेंगे कि प्लीज इंट्रोड्यूस टू द ऑडियंस, सो दैट क्या नाम है, सामने वाले बंदे को पता चले कि हाँ कौन है राहुल. thanks a lot, Anurag, for giving that welcome speech for me. Yeah, so my name is Rahul Chopra, and today I'm here because I am a Relevel achiever now, and I gave a Relevel test very recently, Relevel by Unacademy test for product management. इससे पहले I have not had any product management experience whatsoever, so it's something very new for me to have even thought of giving that test, and I scored the highest in the test till the time like I had given it. So it was a very great experience, and yeah, I'm looking forward to sharing my experience more with you guys. So before this, like product management का आपके पास कोई experience, you were not having any experience of product management. That's right. So I'll maybe give you a little background about myself. So growing up, I've like always studied in army public schools across the country. Uske baad in like the last like in 12th class, I was in Pune, so I chose a college in Pune only for my further studies, which was Brihan Maharashtra College of Commerce. I did my BBA from there in marketing as a specialization. Did a few internships also, like digital marketing, lead generation. उसके बाद मेरे को चस्का चढ़ा हुआ था कि आई हैव टू गो अब्रॉड फॉर further studies. So I gave my GMAT. GMAT में I scored 700 on 800. I got a scholarship to Germany's oldest management school, HHL Leipzig. So that was also a very great experience. So yeah, a lot of management, educational background, no tech background whatsoever, which is very much needed for product managers. So I might add that a lot of people are asking for like engineering background or tech background. So just a disclaimer for everybody watching this, key, you do not need to have tech background to become a product manager. You can do it without also. Only thing is you have to keep your eyes and ears open. So yeah, the why I said all of this is just to for you to understand, and for whosoever is watching this to understand that I literally have only business background Business till background. now. Like, and in January, like around 14, 15, 10, 15, 10 to 15 January, इस साल मेरे भाई ने like auto like he watches a lot of YouTube videos, so he knows like what is happening. I'm थोड़ा old fashioned that way. I cannot like discover a lot of things very fast. तो उसने मेरे को Relevel by Unacademy का ये बताया कि you can give this test. अब यहाँ पे I was thinking कि अच्छा कौन सा टेस्ट दूं, क्योंकि बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, इन सब की सीटीसी सबसे हाई थी, 40-50 lakh maximum CTC, but I am not applicable for that at all. So for me, like सबसे neat, like what I could like जो मेरे लिए गाजर था, like product management वाला this thing, I found that good based on my past experiences, and yeah, I mean I just applied for that test. Best thing was that
there is no, like, you don't have to pay anything for the test, you can give the Yes. test as many number of times. So Mhm. that was like, हाँ मतलब why not, like संडे को कुछ करते, like मैं तो वैसे करता हूँ, मेरा अपग्रेड का भी कोर्स चल रहा है डेटा साइंस का साथ में, but yeah, like संडे को I just thought why not, I'll just give it. And you won't believe, like I prepared just one day before for it. Like I mean, I was seeing Unacademy पे like a free product management का course and googling different things. So yeah, that was just to get my frame of mind right. I'm also reading this book Hooked. It is by Neer Ayal. It tells you how Facebook, Instagram, how they are habit forming products. आपको कैसे मतलब एक हैबिट बन जाता है ये प्रोडक्ट यूज करना. Mhm. दैट बुक ऑल्सो आई वाज रीडिंग, तो उससे थोड़ा प्रोडक्ट में मतलब मेरे को नॉलेज ऐसे आया. एंड या आई मीन संडे दिस 23rd January I think I gave the exam. And yeah, it was something very new, very surprising, and it just like hit me like very suddenly. Like I didn't even Mhm. plan that I would give such a test, have so many interviews. So it was like a proper placement wala scene that happened after I gave the exam. uh, I got a good score at that time. So around 5,000 students had given that test at that point, and Okay. that week around 7 or 8 students had passed, and I had scored the highest in that cohort Great. without a lot of preparation. So So yeah, एक that एक was क्वेश्चन, हाँ, the नॉर्मल, highlight. Yeah, yeah, that sure, sure, sure. you Go ahead. got the highest, like in the month of January, like you are on the leaderboard. So basically, what was the score basically? How much score you got? Score कितना मिल गया? I got 822 Oh, out of 1,000. 1000. Uh, yeah. So yeah, and I think maybe after that, I don't know if somebody scored higher, maybe हाँ or हाँ, maybe not. हो But सकता है, वो I चीज़ दूसरी, think वो yeah, that is that's different possible. thing, Yeah. but But that that is week, very yeah, good, that was that just first yeah, experience. हाँ, right, right. तो लाइक So एक एक क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी फॉर कटिंग यू, वन क्वेश्चन दैट इज, जब आपने पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट दिया, हाउ यू फेल्ट अबाउट द एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट, कि हाँ कैसा टेस्ट है, बहुत टफ है, बहुत डिफरेंट है, मतलब लेवल क्या था पूरा टेस्ट का? honestly, मतलब अब आपको टेस्ट समझने की जरूरत है. इसमें टेस्ट के 5 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज द कैट, लाइक थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, दैट इज एप्टीट्यूड, फॉर हाँ. 100 मार्क्स. हम्म. तो उस वाला टेस्ट में मेरे सबसे कम मार्क्स आए हैं. एंड दैट वाज सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क फॉर मी कि तुम्हारे 1.5 आउट ऑफ 5, मतलब वैसे उस आउट ऑफ 5 स्कोर थे, तो इसमें मेरे 1.5 आउट ऑफ 5 आए थे. बाकी सब में ऑलमोस्ट मेरे 5 आउट ऑफ 5 हैं, और ग्रेट. एक दूसरे वाले में 2.5 या 3 हैं. बट वही था कि ये 100 मार्क्स वाले में आई स्कोर्ड वेरी लेस, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी हु माइट अपीयर फॉर दिस एग्जाम शुड नो, कि जो मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, दैट इज टोटली कैट बेस्ड. अब मैंने कभी कैट दिया नहीं, मेरे को कैट का पैटर्न आता नहीं था कि यू नो बोर्ड गोइंग अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, कंपाउंड समझ रेट ऑफ सकता हूँ, इंटरेस्ट, हाँ ये हाँ सारे जितने क्वेश्चंस होते हैं, ये जीमैट के मैथ्स में यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं. जीमैट का मैथ्स इज मच सिंपलर देन द कैट का मैथ्स. तो या दैट इज समथिंग दैट समबडी शुड डेफिनेटली प्रिपेयर. बट उसके बाद वाला एक एग्जाम होता है, जो पार्ट होता है वो 200 मार्क्स का था, प्रोडक्ट बेस्ड लाइक एमसीक्यू क्वेश्चंस. Some सिनेरियोस case वगैरह, will be हाँ हाँ given, some हाँ scenarios हाँ. would be given to you, and uh, in that, like I didn't score that bad. I scored 132 or 140, something like that, out of 200. उसमें बस ये कि you have to manage your time very effectively. हम्म. That is one very important thing. That is not difficult. It just requires some logical reasoning, and थोड़ा उसमें ये भी, if you've been seeing product management के blogs, or if you've been reading some product management related book, that will help you to sail through it. I mean, you do not need to prepare specifically for that. बट कैट वाला डेफिनेटली, मतलब उसमें थोड़ा आपको, अगर आपने नहीं करा है कैट का प्रिपरेशन कभी, तो 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, यू कैन अच्छा, हाँ थिंक कर ऑफ लो, पुटिंग हाँ इनटू हाँ दैट. हाँ हाँ मतलब इफ डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्वियसली हाँ हाँ हाँ, कैपेबिलिटी, एबिलिटी लाइक, इट हाँ. विल बी 1 डे और 1 मंथ, वट हम्म. एवर. बट या मतलब उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए. प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिनेरियोस वाले पार्ट के लिए इट्स लाइक नॉट अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन इज नीडेड, बट ओनली दैट माइंडसेट आई वुड से इज रादर नीडेड. कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें टुवर्ड्स द एंड, एसक्यूएल वगैरह के, सो मे बी इट्स अ गुड practice to just read up a little on SQL and normal ETL language. Yeah, so these two parts were not very like, actually the whole test was not very challenging. I would say, if you like, if this is what is meant for you, because मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि I'll हाँ सही become a बात है. product Yeah. manager. That was हाँ like such so out of chance. So definitely, like I don't think it is difficult, especially with me who's not having any tech background.
no PM experience. Yeah, If I yeah. can crack it, then I think anybody can crack it definitely. हाँ. The third question was actually a case based question. So अगर आपने पहले ये 2 rounds को आपने पास करके, if you've scored more than 150 out of 300, Okay. you can go to the other rounds basically. So the third round was एक केस स्टडी दी हुई थी, उसमें आपको एज अ प्रोडक्ट मैनेजर सोच के बताना है कि आप क्या क्वेश्चंस पूछोगे स्टेक होल्डर से, ताकि आप उनसे इंफॉर्मेशन और ले पाओ और उनके प्रॉब्लम को और अच्छे से जान पाओ, और थोड़े से यूजर फ्लोज बनाने थे बेसिकली, विच इज लाइक अ फ्लो चार्ट ओनली, कि यूजर मतलब यहाँ लॉग इन कर रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है प्लेटफॉर्म पे, तो दोज डिफरेंट लाइक जस्ट यूजर फ्लो जर्नी, दैट वाज द थर्ड दिस थिंग. तो इसके लिए लाइक ऑनेस्टली मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, दिस वाज जस्ट आउट ऑफ लाइक थ्रू लाइक व्हाटएवर उस आई समय कुड. जो आ गया वो बढ़िया. हाँ. 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 Fourth round was making a product requirements document, PRD. So इसका मैंने थोड़ा बहुत लाइक रिसर्च किया था, टू बी ऑनेस्ट, लाइक 1 2 3 hours मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं पीआरडी के. सो ऑल ऑफ दैट वाज समथिंग आई डेफिनेटली डिड रिसर्च, एंड थोड़ा बहुत लाइक वायर फ्रेमिंग का टूल, समथिंग कॉल्ड फिग्मा. Okay. Like even I hadn't heard of it पहले. Like so Figma is a tool where you can make all these wireframes कि मोबाइल में कोई ऐप है तो वो कैसे लगेगी. Okay. So उस पे like I did make some wireframes for this platform I was trying to design. And yeah, वो PRD बनाने था. So that was the fourth phase of the test. And the fifth phase was a interview with a senior person from product management. Okay. Somebody with like say 10 plus years of product management experience took my interview, and it was very like it was a little like strenuous also, but it was also very casual. Like it was a good conversation, to be honest. मतलब उसमें काफी सारे उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे थे मेरे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, ही सिनेरियोज दिए थे मेरे को. ही वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैं हाउ डू आई लाइक अप्रोच अ प्रॉब्लम, हाउ डू आई थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम. सो या, सो ऑनेस्टली लाइक सुबह 10 बजे से रात के आई थिंक 7:30 दिस होल प्रोसेस took place. And उससे मैंने एक दिन पहले like Saturday I had prepared. So Saturday, Sunday, these 2 days went in preparation for this. But honestly, like I think spending these 2 days for this test is like so worth it. It is more worth it, maybe I would even say, than me going for 2 years to Germany, spending XYZ amount. And yeah, I mean, at least इससे 2 3 चीजें ये हुई कि at least I was for me honestly like money is not the end goal, but still I mean everybody like works for money. So for me obviously I could get a hike जो मेरे को वैसे नहीं मिल रही थी offline. I could get it through this somehow. So that is one small thing, but that is separate. Like for me it was also that I finally found what I'm passionate about, because I have been struggling with operations, marketing, business development. Okay. So yeah, so this was like a game-changing thing for me. Like this particular exam, हाँ. Yeah. So basically जैसे आपने बताया कि हाँ संडे पूरा लग गया, like almost पूरा लग गया, like सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक. So basically what was like how was it? It was very hectic. It was very what kind of like जैसे दिन भर देना पड़ता है, तो दिमाग में कैसा लग रहा था कि हाँ इसको छोड़ देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेसिकली. कई लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि हाँ फ्री ही तो है, फिर बाद में दे लेंगे. कैसा उस समय प्रोक्रेस्टिनेशन जो होती है हमें. सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो देख रहे होंगे वीडियो और वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टेस्ट भर देंगे, टेस्ट देंगे नहीं. तो उनके लिए क्या कहोगे? एक्चुअली ये लाइक पहले तो मैं आपको थोड़ा एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरे 1 2 फ्रेंड्स हैं जिनको मैं इतना पुश कर रहा हूँ, जो अपने जॉब से खुश नहीं है. मैं उनको पुश कर रहा हूँ कि आप रीलेवल का टेस्ट ही दे दो. इट हैज लाइक, बट उनके साथ भी दिस सेम प्रोक्रेस्टिनेशन वाला थिंग इज देयर कि अपने कंफर्ट जोन से शायद नहीं निकलना चाहते हैं. बट honestly like I think it is definitely worth it to spend 48 hours on this test, because for me, मैं सच्ची बताऊं, संडे वाला दिन तो I was so stressed, like so I was in that overdrive mode, मतलब कि मैंने कैफीन ओवरलोड कर लिया था कॉफी पी पी के. फिर मतलब I was only on coffee that day, to be very honest, and I was in that very fast paced mode कि मतलब ये एक मैराथन है जो मेरे को भागना है, मतलब ये भागना ही और खत्म करना ही है, मतलब बीच में नहीं रुकने का कोई ऑप्शन है. बिकॉज लाइक this marathon is like getting me sorted for like life possibly. I don't have to run a single race. I don't have to run a rat race which everybody runs every day.
I can just do a marathon in one day and I can be gone. So yeah, that was it for me. Like थोड़ा वो that stress is definitely there. उसके बाद भी एग्जाम वाले दिन पे तो उतना स्ट्रेस नहीं होता जितना एग्जाम के बाद जब इंटरव्यूज पहले वगैरह बाद लाइन में, अप हाँ. होते हैं. तो ऑब्वियसली लाइक मतलब यू कैन नॉट give a number to the stress, but it is a good kind of stress. I think if you take this kind of stress, it really like I don't know, it shows that you're serious about your life also at some point. And it also like for me it was like really getting out of my comfort zone for those 2 days only, but now I know at least the next 20 years of my life could be sorted because of those 2 days. Yeah, you are right. Basically, this kind of mindset is required if you are giving this test, na, because it will take your whole day. The whole day will be spent on that particular test. So this kind of mindset is required. That if you are sitting on the laptop to give this test at 10 a.m., so you have to give that test. ऐसे नहीं कि हाँ छोड़ के उड़ गए कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं करना है. अगर क्लियर कर रहे हो तो आगे बढ़ते जाओ. That is the mindset you need. And basically एक चीज और, that is the most interesting part of this video. That is बहुत से लोगों ने यही देखने के लिए हो सकता है ये वीडियो देखी. दैट इज द हाइक यू गॉट. लाइक आई टॉक टू हिम बिफोर, ही हैज टोल्ड मी लाइक 300+% हाइक. लाइक हाउ यू गॉट दिस? लाइक it is bit very good thing how you got. If you tell the viewers, it will be very good thing. Okay, so I would like I think I would like to frame it in such a way that it's not like divulging anything also at the same time, which I am not supposed to say. But yeah, I mean honestly, like earlier my salary was below 10 lakh per annum kind of a salary, like not very close also to like a 10 LPA kind of a thing. But for me, like I mean, again, the hike is not the biggest thing, but yes, they have given like a 330% whatever hike they've given. Yeah, and there are like different components of the salary since it's a startup, obviously. So there are these different things. Yeah, but yeah, I mean, it is like there, and yeah, I don't know, like yeah, I can understand. Like we cannot disclose if you're seeing this video, we cannot disclose the exact amount, but it is just to give an idea कि हाँ भाई ऐसे होता है. Like if you are given this so test, you can expect these kind of things. Yeah, sorry to cut you in, Alright, but no I can worries, just give one like little bonus, maybe brownie point to whoever's watching this, that whatever maximum CTC was mentioned on the product management test on the Relevel platform, like you have all these maximum 25 LPA for like it was for product management, maximum 40 for Android or backend. So I've got more than that maximum also. So Great. I am happy, like that is something for Seriously, that is very good, because if a limit is given कि हाँ भाई इतनी limit है, if you are getting more than that, that is cherry on the cake. That is very good. But if you are getting that, also depends on what kind of hustle you have made. कि हाँ पहले आपने क्या किया है, कैसे कैसे वो build-up किया है. लोग बस यहाँ देखते हैं कि हाँ यहाँ पे पहुंच गया बंदा, नीचे की चीजें नहीं देखते हैं. वो नीचे की चीजें धीरे धीरे build-up होती है. That is very हाँ. तो that hike he got, that is also depending on कि हाँ भाई पहले उसने कितना हसल किया. ऐसे मत सोचना कि हाँ भाई मैं भी हाइक ले लूंगा, मैं भी हाइक ले लूंगा. इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेसिकली. ओके, सो on the closing note, on a last note, lighter note, that if someone asks you कि हाँ भाई राहुल भाई मेरे को बताओ that should I give this test, like it is a very hectic test, it is taking my whole day, what is your recommendation as you have a great experience with that? कैसा मतलब कैसा रहेगा? और अगर एक फ्रेशर बनता है, आई एम अ फ्रेशर, सपोज आई एम आस्किंग यू कि हाँ राहुल भाई मेरे को बताओ, आपने ये टेस्ट निकाला, आप मेरे को बताओ कि हाँ हाउ वाज द टेस्ट, शुड आई गिव दिस टेस्ट और नॉट, लाइक दैट. एक तो चीज यहाँ पे आई विल जस्ट वांट टू स्पॉट योर वर्ड की फ्रेशर. इवन आई एम अ फ्रेशर इन द प्रोडक्ट मैनेजमेंट टाइप, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट का खास एक्सपीरियंस था नहीं. तो ऑब्वियसली लाइक आई एम टॉकिंग एज अ फ्रेशर ओनली, व्हाटएवर आई विल बी सेइंग अभी आगे. बट आई जस्ट हैव वन थिंग टू से कि आप सोचो जो डॉक्टर्स होते हैं, आई एम नॉट सेइंग डॉक्टर बीइंग अ डॉक्टर इज अ बैड प्रोफेशन, बट उसमें 10 साल लग जाते हैं पढ़ते पढ़ते. कोई अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें 4 साल प्लस 2 साल शायद आप एमटेक करोगे, फिर आप सोचोगे कि मेरी इतनी सीटीसी होगी. और वैसे भी like everybody like is always at the end of the day going towards the CTC. So I think अगर if you can spend 4 years or 5 years or 10 years studying for something you might or might not get, I think one day का gamble is something you can definitely do. Like go all in, like it is like मतलब
you should like really go all in for this 1 day ka test, and you should definitely give it, and maybe give it twice, thrice, 4 times, 5 times, because कोई limit नहीं है obviously. They're not charging you anything, and you can maybe answers they give that, like they don't give actually what answers there were, but, and I've seen many people complaining about that, but I think that is for you to prepare. Like I mean, आप prepare करो अच्छे से, और you do some research, you think about what questions were asked, you try out better, and maybe after a month you might go get through the exam. So that is what I would like suggest to all the other people watching this video ki definitely like don't be scared कि एक पूरा दिन वो भी संडे का दिन चले जाएगा. That Sunday can help you have a lot of other more happier Sundays. क्योंकि for me honestly like this again I would like to say कि for me the money part is not that big a thing, but for me the bigger thing is which is priceless, that I have finally found something that I love doing, like, and that is for me a very big thing, because in the past 4 5 years I did not know ki matlab, I had so many failures, to be very honest, going from job to job, and that's a big thing ki matlab, you're leaving a company in 6 or 7 months. मेरे किसी भी कंपनी में 1 साल पूरे का एक्सपीरियंस भी नहीं है, and that is a very big red flag for employers. But this was a chance for me, जैसे गंगा में जाके आप अपने पाप नहीं धो देते हो. It was like that for me. This was a dip in the Ganga for me कि I can just go and like yeah freak out. So yeah, I definitely would recommend everybody watching this to try it out. हेक्टिक डे होता है डेफिनेटली, दिन भर काम करके शाम को नहीं हो पाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो ये वीडियो हम लोग शाम को बना रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया. एंड लास्ट वर्ड्स इज लाइक थैंक यू सो मच राहुल फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. बहुत चीजें पता चली, बहुत चीजें जानने को मिला, और इतने हेक्टिक डे के बाद बंदा शेयर कर रहा है तो यार एक कमेंट नीचे कर सकते हो, थैंक यू सो मच राहुल. ठीक है, मेरे को मत थैंक यू कहो, राहुल को थैंक यू कर दो, बहुत सही है. ठीक है, तो यही सारी चीजें थी. थैंक यू सो मच मैन फॉर कनेक्टिंग. एंड जो भी जिसको भी कोई क्वेश्चन है कमेंट डाउन में पूछ सकता है, मेरे को अगर पता होगा मैं बता दूंगा, वरना राहुल भाई से कनेक्ट हो सकते हो, ही विल बी हैप्पी टू हेल्प. सो यही सारी चीजें थी. थैंक यू सो मच राहुल फॉर कनेक्टिंग.